अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खिचड़ी। खिचड़ी क्या है भाई? खिचड़ी है एक ऐसी पॉडकास्ट जिसमें हम एजुकेशन, क्रिएटिविटी और लर्निंग के बारे में बात करते हैं और हम थोड़े से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कुछ मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ, वर्क एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की इम्प्लीकेशंस मेंटल हेल्थ के अंदर। और हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। We have Mary Pervaiz with us. Mary is a psychologist, but बड़ा इंटरेस्टिंग इनका काम है। ये क्या कहते हैं ना, बॉर्डर्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, प्राइमरीली पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड साइकोलॉजी वाली साइड भी बहुत सारा काम करती हैं। सो मेरी वेलकम टू द एपिसोड ऑफ खिचड़ी। Thank you very much. तो जनाब शुरू करते हैं। मेरी, सो इफ यू कैन टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट how did you end up as a psychologist? What was the journey? The quick version of it. Quick version of me ending up as a psychologist. Okay, first of all, I think I'm one of those examples जो आपको देखने को ऐसे मिलती हैं कि जो जिनका as a child they don't really have a direction. क्या करना है जिंदगी में? I wanted to become a lawyer. I asked my dad. I was in 9th grade and मैं उनसे पूछती हूँ कि I want to do law. पूछती नहीं, बताती उनको. And he goes like पाकिस्तान में लॉ, मैं आपको एक दिन जो है ना हाई कोर्ट लेके जाऊंगा. आई गो आउटसाइड हाई कोर्ट और वो कहते हैं कि देखो ऐसा होता है, धक्के धुक्के खाने पड़ते हैं और ये सीन है. आई लुक एट इट एंड मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, बट ओके लेट्स सी. आई एंडेड टेकिंग बिजनेस कोर्सेज इन माय ओ लेवल्स और ए लेवल्स में मैंने पढ़ा साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इस्लामिक स्टडीज. हाँ, 3 subjects that are not really related. चलो food and psychology maybe still now are I take mind, body and soul together. So, you know, now I can correlate. लेकिन Islamic studies, why? Because I was so curious कि what is life? क्या है ये सारा सीन ना जिंदगी का? Because living as a Christian here in Pakistan, you're studying something else outside, you come back home to something else. So you're a confused child. So you're like कि क्या करना है? So I figured कि अच्छा, मैंने घर पे ही बोला कंपैरेटिव रिलीजन का एक कोर्स है, तो that's what I'm studying. सही सही। क्योंकि चॉइस है अगर कि 50 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से क्या कर रही हो, तो फिर ये क्या है? तो साइकोलॉजी in short was never something that I was really looking forward to. But I think that at home and otherwise, I got a very open environment to explore myself, to explore different sides and aspects of life, which made me a person who was easy to talk to, became a good listener. I was the oldest child and so I have 4 other younger siblings. तो I think वो छोटी छोटी चीज़ें जब एड अप होती जाती हैं, फिर दुनिया जब आप इधर उधर दीवारों में बचते हैं तो फिर आपको वैसे भी जिंदगी में समझ आती है कि how to respond to things. And again, I would give this credit to my dad to give me that open environment. बड़ा अच्छा पेरेंटिंग लेसन है, क्योंकि अगर आपके फादर आपको न लेके जाते तो आज मेरी इस पॉडकास्ट में होने की बजाय प्रॉब्ली हाई कोर्ट के आसपास कहीं या तो शेलिंग का शिकार हो रही होती या पथराव कर रही होती वकीलों के साथ। मुझे लगता था यासिर कि I think that even with psychology, I sort of paved my own direction. I don't know many psychologists who are doing everything that I do. And as a lawyer, अगर मिसाल के तौर पे मैं कभी लॉ कर भी लेती अगर या अगर कभी कर भी लूँ तो पथराव में इनोवेट करती हैं, तो शायद I would do something different too. And I don't think that I would be conventional. As a psychologist, I see कि मेरे बैच के अंदर अगर तकरीबन 157 people graduated. I don't even know 2 other people who are practicing the way that I do. आप या तो you end up in schools teaching math and history. You're in clinics and hospitals and that's about it. और फिर आप काफी बोर होकर जिंदगी से और बस खत्म हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे, क्योंकि दिस फील्ड, अगर हम इस फील्ड को इन जनरल देखते हैं, इट्स बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं। आप एज अगर आप वर्क या बिजनेस भी बात करें ना, ऑल्दो हम उससे बात नहीं करें, तो बिकॉज इतना स्टिग्मा अटैच्ड है, सो आपको जनरली लगेगा कि आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज, अ बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, बट जनरली पीपल अप्रोचिंग मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, फिर भी इतने लोग साइकोलॉजी में, साइकेट्री में जाते हैं, तो ये कैसे, कहाँ से ये इतनी थॉट ऐसे चले जाते हैं उठा के, क्या होता है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जिस 150 बच्चे की बात बता रही हूँ जो मेरे बैच में थे, मोस्ट ऑफ देम वर डूइंग इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. कुछ लोगों के लिए वो माइनर था, कुछ लोगों के लिए वो सेकंड मेजर था. इट वाज नेवर रियली समबडीज फर्स्ट ऑप्शन. अगर 150 बच्चे उसमें से 10 लोग हैं जो सोचे कि ओ आई एक्चुअली वांट टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैंने कुछ होमवर्क किया हुआ इसको लेकर.
some kids who are unable to understand कि क्या course मैंने रखता है. I was in FC, so FC में आप जनरल एड भी पढ़ रहे हो, आपका एक कोई स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं जो कि आपका मेजर या माइनर से रिलेटेड है. तो अब उसके अंदर अगेन आई वाज इन दिस ओपन एनवायरनमेंट वेयर यू हैव चॉइसेस टू मेक. So I would see people making this choice not because they want to become a psychologist one day, but because it's convenient or they're curious or they don't know what else to do. They end up there. So ending up there के perspective से एक बड़ी interesting इसी पे अगर हम build करें तो, because psychology में like you said कि आप जो प्रैक्टिस कर रही हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं, वी नो बिकॉज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी काम कर रही हैं और उसकी इम्प्लीकेशन में और लोगों को कल्चर में भी और साइड में बहुत सारा काम कर रही हैं. सो हम प्रैक्टिस करने की बात करते हैं साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है. जैसे आपने बात की कि पीपल एनरोलिंग इनटू साइकोलॉजी दे एंड अप देयर, बट कैरियर पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत, मुझे लगता है फॉर एग्जांपल विमेन इन पर्टिकुलर, लॉट ऑफ देम एंड अप एज टीचर्स. और मुझे लगता है कि क्योंकि साइकोलॉजी में एक गिवन ये होता है कि ये करियर है, दे एंड अप गेटिंग एक्सप्लॉइटेड अ लॉट बिकॉज दे डोंट सी द ऑप्शंस दैट आर आउट देयर. राइट. सो व्हाट आर इन जनरल व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस? जैसे मैं एक बात करता हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री इज अ ग्रेट ऑप्शन, राइट राइट. मार्केटिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, आप इन फील्ड्स में जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा है काम कर सकते हैं. बट इन योर ओपिनियन व्हाट अदर फील्ड्स दैट आर आउट देयर जो जिस पे काम किया जा सकता है इस फील्ड से पढ़ के? जब अमेरिका जा रही थी ना, तो वहाँ पर देयर वाज दिस पैनल ऑफ 3 पीपल हु वर इंटरव्यूइंग बिफोर द वीजा प्रोसेस. इवन हमारी एप्लीकेशंस थ्रू करने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, एक दरमियान में अमेरिकन वीजा ऑफिसर बैठे हुए हैं और साइड पे एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है. अमेरिकन मुझसे आराम से पूछते हैं, अच्छा सो व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर रूटीन लाइक दिस एंड दैट. ये भाई मुझसे पूछते हैं, इन्होंने तो रिजेक्शन दिलवानी है ना सब बच्चों को. ये भाई मुझसे पूछते हैं, so you're studying psychology, so you intend to study psychology in America as well? I was like, yeah. So he goes like, okay, so how do you think psychology can help in studying economy of a country? And this was the first time ever that somebody had asked me this question, and I was in my 5th semester. सिलेबस से बाहर आ गया ना सवाल. फिर मुझे याद आया कि 10 सेकंड लेना ठीक है, गलत जवाब देना तो गलत है. So let me take 10 seconds. And then I said that, okay, you know what, you study the pattern of buying and selling and consumers and all of that. So जब economy के अंदर मैंने को बोंगी शोंगी सी मार के सवाल दे दिया. जब तक जवाब नहीं आ गया, वीजा का रिस्पॉन्स नहीं आ गया, तब तक I was like, ये एक सवाल मरवाएगा मुझे. बट बचत हो गई, चले गए हम. So I think that psychology is in every aspect of your life, whether it's how you eat, why you do what you do, what makes you get up in the morning, why are you motivated, why are you demotivated, why are you now in gaming and why would you not be in gaming 10 years later. मिसाल के तौर पे, why am I doing this interview right now, what is my reason and purpose of doing anything that I'm doing. तो वो corporate से लेकर आपकी personal life से लेकर आप what are the foods that you like, what is the sports that you like, वो हर चीज के अंदर वो implement होता है. तो मेरा ये ख्याल है कि as a professional सबसे पहले तो you have to open up your mind with this, that I have endless options of where I want to step in. पाकिस्तान में unfortunately अभी तक सिर्फ 4 कोई डिग्रीज हैं जो करवाई जाती हैं साइकोलॉजी के अंदर. क्लिनिकल, काउंसलिंग, कॉग्निटिव, आईओ आजकल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में नया हमने ट्रेंड खोला हुआ है. तो ये 4 हैं जिसके बारे में आप कॉमनली सुनेंगे कि लोग बात कर रहे होते हैं. देयर आर 50 अदर सब फील्ड्स इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी वाज ये डिराइव हुआ है फ्रॉम फिलोसफी, फ्रॉम sociology. I was fortunate again, I was studying sociology with psychology. I was a double major in that. So मतलब वो एक different aspect आपका ये एक micro चीज़ और एक macro है. So I think to be a professional, especially in something which is related to humans and that too so closely, which is so personal, you have to have a balcony view. You have to have that macro view, that what does it look like from above, from up here. That sounds very interesting because अब अगर हम इसी को लेते हैं, हमारा इकोसिस्टम तो बहुत डिफरेंट जगह खड़ा है, बट कल को ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, स्टिग्मा लेट्स से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कम हो जाता है मैजिकली. लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साइकोलॉजी और लोग के पास एक्सेस भी है और लोग आ भी रहे हैं. तो फिर तो गिवन द ब्रेड्थ दैट यू हैव एक्सप्लेन, बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा. कौन पुलिस करेगा इसको, कौन क्वालिटी इंश्योर करेगा, कैसे होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जब मेरे पास कोई बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू मी एंड आई से दैट आई नो यू यासर, सो मे बी आई कांट काउंसिल यू, सो आई वुड हैव टू रेफर यू टू समबडी एल्स बिकॉज दैट्स एथिकली नॉट राइट फॉर मी टू काउंसिल अ फ्रेंड और समबडी दैट आई क्लोजली नो. ठीक है. एंड इफ आई हैव टू रेफर टू समबडी, तो मेरे लिए वो काफी चैलेंज होता था अ कपल ऑफ इयर्स अगो.
एंड आई वुड से कि ओके आपकी ये शायद डिग्री होनी चाहिए, ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स का, ये वो, तो तब ये शायद एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा. But with experience of myself and other people going to these people, I figured that if you're a bad quality human being, you're a bad quality professional, especially when it comes to psychology. And it's worse because you are dealing with people Emotions here. and people, yeah. अगर एक ऐसा बंदा है, जैसे for example, if you've got an issue and I am not an expert on it, if my intention is to make money, I would drag it. 1, 2, 3, 4, 6 सेशन सर आपको recommended है, ठीक है. If I am a good quality human being who says कि यार उसका मसला चल रहा है, I need to refer this to somebody, I need to be honest about it. I don't have all the answers. So that's when I decided कि okay, now when I refer somebody, तो ये मेरा कुछ criteria होगा. पाकिस्तान को लेकर अगेन, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह उस तरह से नहीं है. A couple of years ago, this became a talk of the town. People were, निकल रहे हैं and they're trying to figure out who's not a professional, who is a professional. I know people जो कि MA उर्दू करके they are 20 साल से addiction specialist बने हुए हैं. तो मतलब it's stupid, but at the same time, right now, I think it's super tricky. जब when I started, it was 2018. मुझे लगा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे. मतलब I started to work with this rehab and I entered this place and 10 seconds down, I know that this is not my place. I can't work here. I saw 3 deaths with overdose there in that 1 month. और मैंने वो 1 महीना अपने आप को इसलिए दिया because I thought that maybe this is the first time that I'm coming in a place setting like this. Maybe I'm not comfortable. Maybe this is, I need to settle down with that mindset of, oh, I have to work 12 to 8 p.m. तो थोड़ा सा टाइम देते हैं. I discovered how bipolar, schizophrenia, addiction, फलाना, सारे जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप सेशन में बैठे हुए हैं और सब लोगों को एक ही थेरेपी मिल रही है, ठीक है. The medication that is being given, the way that they're treated, there was a curriculum that the psychologists had to study while they were practicing there, and the first book that we were supposed to study was How to Sell to the Affluent. सही. And I was shocked because मैंने कहा कि पहली बात मैं सेल्स तो करने नहीं आई थी. दूसरी बात, like if this is and they would openly say that this is a luxury that only the rich can afford. So our target audience or our audience is not the middle class, the lower middle class, जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ऊपर बसले ज्यादा है या नहीं है और कहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा होगा, but therapy or mental health is something which is a necessity for everybody. When people ask me कि किसको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, and I would go and I do go to my therapist because as a psychologist, you're so emotionally overwhelmed by your own shit of life, and then the things that you're listening of other people, it's emotionally overwhelming. So you're supposed to see a psychologist every week. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट पे, हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि वहाँ क्वालिटी कैसे इंश्योर करें एवरीथिंग, और पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे हम. लेकिन एक और पहलू जो यू जस्ट मेंशन्ड कि सब लोग डिफरेंट तरह के जो चैलेंजेस फेस करें वो एक ही थेरेपी में बैठे हुए हैं, एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑब्वियसली जो वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उनकी फॉल्ट है. बट एक चीज़ मैंने देखी है, ऑब्जर्व की, व्हेन आई यूज्ड टू टेक माय किड्स टू थेरेपी, तो जनरली विद माय किड्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम द ओनली फादर इन द सराउंडिंग्स. फादर्स होते नहीं ज़्यादा, मदर्स होती हैं. तो लॉट ऑफ मदर्स विल अप्रोच मी एंड आस्क मी कि अच्छा आपके बच्चे को भी यही चैलेंज है जो उनके बच्चे को होता था. सो ओवर अ पीरियड टाइम आई स्टार्टेड टू लर्न कि यार लोगों का पर्सपेक्टिव ब्रेन के बारे में ये है कि जो उनके बच्चे को चैलेंज होता है वो समझते हैं ब्रेन में शायद यही एक डिवर्स चीज़ हो सकती है. अगर उनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो दे वुड अज्यूम कि सिर्फ एक ही वेरिएशन होती है, ऑटिज्म ही होता है. अगर उनको ADHD है तो वो अज्यूम करेंगे ADHD होता है. सो अब दिस ऑब्वियसली इग्नोरेंस इन अ वे, लैक ऑफ नॉलेज इसको कहें, ऑल्सो एड्स टू के जब आप खुद भी फर्क नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, एंड थोड़ी बहुत नॉलेज होना ऑफ द ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट. नॉट दैट कि हर कोई WebMD पे जाकर डॉक्टर बन जाए, बट पता होना कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है, या अगेन नोइंग द क्वालिटी क्या है. तो जर्नल, अभी हम स्टिग्मा तो छोड़ देते हैं और अप्रोच तो छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, बट जनरली ये अवेयरनेस फैलाना ये कैसे होगा? हाउ डज द कंज्यूमर नो कि मुझे राइट सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही? We did a very interesting program with one school. अच्छा, अब वो जो स्कूल है it's upper middle class, elite class वाली category. But what we did was that for the 3 months, the first 1 month was just me conversating with the kids.
what are their problems, what do they know about mental health, what can I tell them about mental health. And it was very interesting that these kids, which were between the classes of 8 to 11th, they knew things. They knew the difference between depression and anxiety, जो कि हमारे adults को नहीं पता होती है ना. They knew कि psychiatrist और psychologist में क्या फर्क होता है. They knew the basics. अब इसके अंदर आप Netflix को credit दे दो या आप social media को credit दे दो, whatever they're getting this information from, they knew what mental health is. The next 1 month was with the parents. And in these sessions, we were now addressing questions that parents thought कि नहीं, मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बहुत है. वो गए, उसने मुझे कहा, एक ने बताया, कहती है तो उसकी पॉकेट मनी है 15,000 और उसने जो है एक ऑनलाइन कोर्स जो था वो रजिस्टर कर लिया. आई एंटर हर रूम एंड आई से कि बेटा क्या कर रही हो, तो शी सेज कि वो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स समथिंग रिलेटेड टू कोडिंग वो मैंने ना साइन अप किया उसके लिए. कहती है एंड आई वाज सो सरप्राइज कि उसने मुझसे पूछा भी नहीं. तो इतनी इंडिपेंडेंस तो ये तो सही नहीं है. लाइक ओके, मतलब पहली बात तो वो कुछ गलत कर नहीं रही है, so you should be appreciative and encouraging of that. But as a parent, I think that they would also, the way that they were parented, the way that they have, just entered parenthood without learning and without this awareness कि करना कैसे है सारा system, वो एक अच्छा system हमने किया. फिर उसके बाद the next month was with teachers. So ये जो तीन चीजें, अगर मैं कहूँ कि जी I teach you today what is self-love, okay, and you go home and you say that me for me and I'm gonna be living my life, and your wife is clueless of what क्या मतलब है, you would look selfish to her. You look like कि अच्छा ये तो अपने में ही कुछ मगन हुआ है and he's completely क्या कहना चाहिए ना, what's this word, oblivious of what my needs or requirements are, right, and my kids. So I think that the education and the awareness of it has to be on all levels of wherever the interaction is happening. The kids are better in understanding and awareness at this point. However, जो उनको information मिल रही है, that second hand information might not be as reliable and also culturally appropriate. सही, right? Because अगर Netflix के ऊपर हम एक season देख रहे हैं which is completely different from what culture you're living in, the kid would rather be more confused than educated. That मेरे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा. तो if my mom is demanding that no, I stay with her until I'm married, it's wrong. Because बाहर तो ऐसे नहीं होता, मैं तो ऐसे नहीं देख रहा, वो तो 16 years. अच्छा ये so ये जो एस्पेक्ट आपने यंग लोगों, सो जनरली व्हेन वी सी के यंग लोग किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और दैट्स देयर पेरेंट्स वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस इज यंग. सो इस एस्पेक्ट से देखते हैं, तो एक तो एस्पेक्ट समझ आती है कि एक जनरेशनल गैप हमेशा होता है. राइट. हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ था, हमारे बच्चों के साथ हमारा होगा एंड एवरीथिंग. तो क्या ऐसा है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस या जो एक्नॉलेज करना कि एक चैलेंज है, मेंटल हेल्थ एक एरिया है जिसको देखने की ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस बड़ी है, क्या ये है, और हो सकता है ये इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हों, और क्या ये है कि ये होती है पहले बट थ्रू कंडीशनिंग ये डाई आउट कर जाती है, बिकॉज द पुश बैक यू टॉक्ड अबाउट के पेरेंट्स वो पुश बैक देते हैं. वो एक चीज़ होती है ना, हम कहते हैं अपने बच्चों को वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वी कीप सेइंग कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, करते नहीं. एंड व्हेन आई लर्न दिस कि होता ही है कि हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स हर चीज़ में बच्चों को, वो लर्न नहीं कर रहे होते, वी वांट देम टू बी इंडिपेंडेंट. बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि 2 दिन अगर वो बाहर गुजारते हैं ना, तो वो 2 दिन में बड़े हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी सीख जाते हैं, वो नेविगेट करना सीख जाते हैं. तो क्या ये जनरेशनल गैप भी कुछ प्रेशर डालता है, ख़त्म कर देता है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को, या अभी यंगर जनरेशन में ये अवेयरनेस वाकई में ज़्यादा हो गई है थ्रू getting exposed to information? The aspect that you're talking about, I think वो बड़ा interesting and I want to talk about this, that when you're in a relationship, चाहे वो parent child है, चाहे वो otherwise your partnership with your spouse, if somebody gets used to of being taken care, you get used to of taking care also. So that codependence is something that parents are not comfortable with. अब वो जो कहानी है कि जब बेटे की शादी होती है तो माँ क्यों इतनी possessive हो रही होती है और क्यों इतनी uncomfortable होती है नई पति से, या other way around as well, vice versa as well. Why is the father not comfortable with another guy? So maybe culturally speaking, they have to sometimes force themselves to let go of things, but they're not comfortable. It's because you are trained to take care of your child to an extent कि ये आपकी responsibility और ऐसे लिखा हुआ है जैसे पत्थर पे लकीर है, and if you're not doing it, so there's so much guilt that is induced in you
that even when they're becoming independent, you feel this sense of abandonment. You don't feel belonged anymore. आपके अपने जो internal attachment issues हैं वो surface करना शुरू कर देते हैं. तो I think ये तो खैर ये वाला aspect है. जहाँ तक बात है कि ये बच्चे ज़्यादा aware वाकई में हैं या नहीं, I'm saying it again that having a theoretical information of something, अगर वो culturally appropriate नहीं है, your kids would end up being more confused. They would end up being more internally conflicted. You would have relationship issues with your children. They would, अगर हम अपने अम्मी अबू को समझते थे कि यार इनको नहीं पता क्या कह रहे हैं, I know better. A 14-year-old thinks I as a 14-year-old thought कि मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ. And today I look back and I think I was so stupid. What was I thinking? And you know, some कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप you independently take decisions, you let your kids make those mistakes, और वो mistakes वाकई में आपको सिखाती हैं. जिस तरीके से एक गलती, एक तकलीफ, एक पेन आपको या सफरिंग आपको सिखाती है, continue saying whatever you want to say to your kid. They would not learn. They would not learn. I think my personal opinion on it is that we should let the kids explore a little. अगर गलत information उनके पास है भी तो you could give them that information, you could give them that direction, but let them explore a little practically so that when they end up doing something wrong, they can trust you now because oh he was right. नहीं, एक चीज इसको हम इस तरह से कहते हैं कि अक्सर a lot of kids come to me और वो मुझसे पूछते हैं कि हम for instance हम games बनाना चाहते हैं because App Labs works in the area of building games and their parents do not approve of it. Right. और challenge ये आता है कि अच्छा parents तो कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ देखो parents want what is best for you. Right. And let me rephrase it now. So parents want what they think is best for you. Yeah. So now and this is a topic I want to quickly explore with you as well. Okay, now you need to practice how do you give them this information that they can make an informed decision what's best for you. Okay? So that's very, very important. So in a way, giving it the right amount of respect. जैसे अभी आपने बात की कि you will sound selfish to other person. Now ये एक बड़ा अजीब सा chicken and egg kind of problem है. Should I be so self love वाली बात? Should I go in that direction first? Should I then also in parallel learn कि जब मैं when I learn to love myself this way, how do I respect people around me so that they see the difference as well. ना वो ये बात है ना, एक तो rebellion है, mindless किस्म का rebellion है कि बस मुझे करना है and I don't really care. But जैसे मैंने बात की, but जैसे कि आपने इर्द गिर्द लोगों को भी वो respect देना for them to make them understand what you're going through regardless of कि शायद उसकी acceptance ना हो. ये बड़ा critical सा balance है. तो ये balance है कहाँ वैसे इसमें? आपका ये journey of mental health, of social well-being cannot be whole until you're not incorporating other people in your life. Well, there's this quote which, you know, when in meditation you talk about it and you say that I am because you are. I exist because you exist. Right? तो वो जो communal, that social belongingness जो हमारी है वो बहुत essential है. आप थोड़े अर्से के लिए, you know, you isolate yourself and you're like, अच्छा मेरे लिए मैं ही काफी हूँ, I can travel together myself, I can eat alone, I could, you know, go for shopping alone, I could live my life alone. It's a very temporary venture. It's not something that is long lasting. It is not something that makes you happy. It is not something that makes you content. Let me say that. Not happy, but content. When somebody says, okay, how do you be happy? How do you know that you're happy? How do you know that you're happy? That's an interesting question. Yeah. I feel happy. You feel happy. But that feeling could be temporary. Right. And is there an objective measure of it? For me, I go through it day by day. Right. If let's say I have my Zen, then I feel I may be doing the right thing. So if I give you, just visualize this, if I give you a bell curve to visualize, so on that bell curve, where do you think your heart is when you're happy? Is it here? Is it here up on the top, on the peak? Is it here where? I think when you're happy, you feel like, oh, I'm the king of the world. That's that feeling. Right. So you're always there. Okay. So that means it's somewhere on the top? Yeah. Okay. So being content and being happy is being stable. It's right in the middle. You're not excited, so your heartbeat is not going crazy. You're not nervous or, you know, slow. And yeah, so your heartbeat is not slow.
You're just here. You're right in the middle. Being content is, I'm here, I'm present, I'm satisfied. That is being happy. That is being content. Hamari definitions ही क्योंकि इतनी we don't pay attention to it. I was just having a session an hour before this recording, and I asked this person, so, you're traveling to Quetta, you're going to be meeting a family after a long time. So what do you plan to talk to them about? And she's like, I don't know. We are not used to of planning. We're not used to of thinking. We don't know why am I doing what I'm doing. I'm just supposed to, वो आपने आपकी चेकलिस्ट है जिंदगी में क्या क्या करना है. डिग्री कंप्लीट कर लो, फिर शादी कर लो, फिर नहीं पहले नहीं डिग्री कंप्लीट करो, फिर नौकरी ले लो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा कर लो, और वो चेकलिस्ट आपकी चलती रहेगी और जिंदगी बस ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि दिस इज अ कन्वर्सेशन आई लाइक टू हैव विद पीपल ऑफन के let's switch gears and let's talk about थोड़ा सा office and corporate environment वाली side पे भी. Please. And linking this to what you just said, so people come to me and say कि work life balance होना चाहिए. तो my first question to them is, what is life for you? If is life going back home mindlessly scrolling through phone? Is life is sitting in the living room with your parents but watching TV, not talking to anybody? Is life is giving your kids your cell phone and then busying yourself with something else which you don't really care about? Right. Is that what life is? If that's what life is, there is no need for a work-life balance. So what's your definition of life? Right. So इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, I want to really talk about the official environment में leadership challenges के perspective से जब बात करते हैं, तो और अभी जो है वो इसको इस तरह से देखें कि leadership की एक कंपनी के अंदर क्या core responsibilities हैं when it comes to mental health, when it comes to maintaining a healthy team, mentally देखा जाए तो कैसे balance, because given अब हमने बात की कि work life balance में work definitions, you just talk about definitions, तो life की definition क्या है, work की definition क्या है, वो ही गलत है अगर, तो leadership कैसे ensure करेगी work एक healthy team, mentally healthy team? अच्छा, anything that is social, psychological, mental health, human related, I think there are certain determinants जिसको आप define कर सकते हैं, उसको आप objectively measure कर सकते हैं, but most of it is very subjective. What makes you happy might just be cringe for me. What makes me excited about something might be completely useless and meaningless for you. So it's subjective, but at the same time, leadership जो है वो what can they do to provide an environment where people are at least talking, at least expressing, they have the room to express themselves. It's a tricky situation, especially in a country like ours, because हमारे culture में अभी क्योंकि ये चीज़ इतनी है नहीं, तो when we take sessions और हम जब trainings भी करवा रहे होते हैं, जब आप corporates के साथ बैठते हैं, तो it's very confusing for a lot of people. What do we talk about? Can we talk about something personal? Can we talk about what's disturbing us? Am I only supposed to talk about कि काम में क्या मुझे तंग कर रहा है? All of that. I think leadership, when it especially comes to mental health, अगर you are somebody जो कि अपने work culture के अंदर उसको incorporate करना चाह रहे हैं, it's a tricky situation. Why? Because you, as soon as you open up wounds, you're maybe also now supposed to help them heal. And if you cannot invest that time in them, is it even worth it then? क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा तो नहीं खराब कर देगी. आप मिसाल के तौर पे एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सेशन करवा रहे हैं, ये ग्रुप सेशन चल रहा है और उसके अंदर आप कहते हैं कि टेल अस व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू आर अवेयर दैट देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स दैट यू कैन नॉट रिजॉल्व. आपकी कोई भी अपनी जो भी बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी अपना जो भी आपका बिजनेस प्रॉब्लम है उसकी वजह से यू कांट रिजॉल्व इट. सो इज इट वर्थ ब्रिंगिंग अप? Am I capable in my conversation enough that I help this person come on my page? हम same page पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? So this is why I think it's a little tricky. Not हर पूरी leadership को मुझे लगता है कि हर काम एक leader ही नहीं कर सकता ना. कि if you've got a role that you have to play, if you're the CEO of your company, and if you've delegated this task to me, you put this trust in me that, okay, this person, because I've hired them, because she's capable of da-da-da-da-da, now I leave it on you, you give me a report, and then we go about that situation. I don't think that the leadership in itself can resolve all the conflicts while they're helping generate revenue, while they're training them how to do the sales, while they're trying to build a culture, all of it. Yes, you could supervise it. Yes, you could
give that open environment, but at the same time I don't think कि इतनी responsibility भी जाने तो की ओपन एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, बट आई फेल्ट इज जनरली वो जो कल्चर ऑफ आप कह लें सेल्फ सेंसरशिप होता है, या उसके साथ साथ स्टफ लाइक के पीपल हैव हैड टू मेनी बैड एक्सपीरियंसेस, right सो अगर आप उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट भी देते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ मिसट्रस्ट, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ डाउट, right so Right. that always gets in the way of people opening up. So do you see कि is that an issue? If that's an issue, कैसे उसको solve किया जाए, या that's not a problem at all if given the right environment over a period of time people do open up? You have to let people be comfortable with themselves. हमारे पेरेंट्स ने ये अगर नहीं किया, आपके कल्चर ने अगर ये नहीं किया, आपकी सोसाइटी अगर ये नहीं अप्रिशिएट करती कि हम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तो ये लैंड कर जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कॉर्पोरेट के ऊपर, क्योंकि कॉर्पोरेट चाहता है ना कि रिटेन भी हम करें इस बंदे को, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपने साथ, इफ दे नॉट कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, दे वुड एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, और वो कहेंगे कि द रीजन अगेन, क्योंकि उसको समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ है, they would point out other things कि ये क्योंकि my lead was like this, क्योंकि my team member was like this, क्योंकि मैं open space में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास private room नहीं है तो privacy नहीं है, क्योंकि मैं 9 to 5 कर रहा हूँ. They would want to put this responsibility on something else because they have not really understood कि मेरा अपना मसला क्या था. Why am I unable to adjust with this team? Why do I not like talking to this person? मेरे अपने cognitive distortions क्या हैं? आजकल जब ट्रेनिंग्स के अंदर माय फोकस, और नॉट माय फोकस, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इज द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड एरर्स. देयर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, और वो जो मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी अमैलगमेशन इज कॉग्निशन. ठीक है, अब उस कॉग्निशन में जब एरर आ जाता है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है. उसको मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, यूर एन एक्सट्रीम एंड्स, यस और नो, मेरा कोई ग्रे एरिया नहीं है. जैसे सेल्फ सेंसरशिप इज एक्चुअली ऑल्सो वन ऑफ द कॉग्निटिव एरर्स, जिसके अंदर you are so close to yourself that you don't speak up about the things that are making you uncomfortable. अच्छा, आपको एक चीज एक दिन अनकंफर्टेबल करती है, एक हफ्ता करती है, एक महीना करती है, उसके बाद इट इफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी. योर लीड थिंग्स यू आर जस्ट अ लूजर हु कांट प्रोड्यूस गुड वर्क. लेकिन आप क्योंकि अपने आप को इतना ज्यादा बॉटल अप करते जा रहे हो, नाउ यू आर पैसिव एग्रेसिव, नाउ यू आर नॉट प्रोडक्टिव, now you're mean to people, you don't feel like coming to work, you feel that work is crazy and बहुत pressure है ये वो. आपने अपना पहला एंड ही नहीं पकड़ा ना, आपने उसका रूट कॉज ही नहीं पकड़ा. Personalization and self-blame कि oh, if there's something that's going wrong, it's because of me. That's another problem. Mind reading and making these predictions. जिसके अंदर मुझे ये लगता है कि या ओवर जनरलाइजेशन. यासिर ने अगर आज मुझसे, he was passing by and I say salam and he does not greet me back, I say अच्छा ये अभी किया है, कभी भी नहीं करेगा. He's probably rude to me, and then that one thought goes on to the next and next and next. So I think that start reading unnecessarily between the lines. Yes, the stuff that is not even there. So I think that one of the very important things that not just leaders but also people who are working in a corporate have to understand is कि अगर मुझे मेरे बारे में नहीं पता कि why am I thinking like this, why is my decision making like this, तो तब तक मैं I cannot put this responsibility and accuse other people and situations and environments for the things that are going wrong in life. अच्छा, so let's jump on a bandwagon. आजकल सब AI की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें. So what do you think, what role can AI play मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एक्सेस इम्प्रूव करने से रिलेटेड, या किसी और चीज़ से रिलेटेड AI का क्या रोल हो सकता है? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी केयरफुल अबाउट? व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमें नहीं सोचनी भी चाहिए? AI के हवाले कर दें हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. अच्छा, I think that it's a great tool when it comes to finding information. I see a lot of people doing their assignments, doing their official tasks on AI. I think कि जब तक कि एक objective, factual उस तरह की चीज़ है कि you want to produce data, you want to produce a piece of information which is high quality and you want assistance or you want it to do it, I think it's okay. But when it comes to mental health again, तो information चाहिए आपको, factual data चाहिए. मिसाल के तौर पे what is bipolar disorder and you get information about it. अच्छा, I think I have these symptoms, or वो the conversation that you can now have with AI, and they start to respond you with it. Are you asking the right questions or not? Because the AI is this or that, right? वो तो black and white ही है. It's this or that, and I don't know whether this is going to
advanced to an extent where it also starts to ask you questions that, okay, what was your childhood like? And what was this experience? And what did this make you feel? And how did you end up in this situation when, these questions that only maybe a human interaction or somebody that can subjectively understand your opinions. जब तक मेरा ख्याल है कि वो नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि एक हाई क्वालिटी थेराप्यूटिकल सेशन हो सकता है between an AI and... That's a very interesting thought, and maybe scary, or lack of a better word, let's call it scary, way to imagine this is, you talked about agar AI you provide this information. So what if there is no need to essentially provide that information? And how that's going to happen is, given the amount of data each human being generates now, so you are generating like 10,000 pictures, videos a year, and so an AI eventually already does, but eventually will have deeper access to all that information. Right. And it's already analyzing you from very early childhood. So given the data that we have created for our kids, even since they've been born, a tremendous amount, it'll have a very deeper and profound understanding of a particular human being, because you don't even need to tell it कि ये इंसान कैसा है, या ये इसका डेटा है, या ये इससे सवाल पूछे हैं, ये जवाब करें. So there is no need of that session, but वो data सारा created and is already fed to it. Right. So through videos, it's analyzing the behavior of that child that's now maybe 40-year-old now, and it understands it better because it has a continuous benchmark and a yardstick for that particular kid. So who knows how interesting or scary it could get. इसी से related एक जो important चीज, this generative AI की हम बात करते हैं, for the past 1 decade, 1.5 decade, ये जो continuous scrolling है, which has become really mainstream now, habitual now, it has had probably some really adverse effects on us. But जब हम generative AI की तरफ जाते हैं, now we are talking to computers, having a conversation. Those conversations, we can easily assume they'll get more and more profound and more deeper over a period of time. So now from scrolling, mindless scrolling, to just talking to computers, what kind of adverse effects do you see कि ये और हालात human behavior में क्या change आएगा, क्या कुछ चीजें बुरी होंगी, क्या अच्छी होंगी? What do you see? अच्छा, पहली बात तो ये कि 3 to 7 seconds is now what your attention span is. कि मतलब if I want to gauge your attention, I have only 3 to 7 seconds. If my video, if my content is not good enough, it's not interesting enough to you, you will scroll up. So this is one objective consequence जो हम अभी देख रहे हैं कि attention span all the time लोग complain कर रहे हैं, focus नहीं है, concentration नहीं है, क्योंकि real life के अंदर तो अभी भी आपको बहुत सा काम manual करना पड़ता है. अभी भी conversation जब हो रही है, and if you're zoning out again and again, and if you're not on the topic of discussion, we are having a bad quality conversation then, right? तो अगर वो attention span तो इस तरीके से आपका disturb हो रहा है. There could be arguments कि the world today is working in much more smarter ways, and is more productive than ever in human history. Okay? But at the same time, what is the quality of relationships that we are having? Our quality of relationships is decreasing, it's deteriorating, because the value of human is not as much. I could be sitting in my room the entire day, scrolling through my phone, and would not need a conversation because it's so interesting. It's giving me what I need. It's giving me the dopamine that I want. Dopamine is this happy hormone. If I am not in a good mood, my serotonin could literally be stabilized, which is a mood stabilizer in my brain. And so I think that it's great when it comes to this, that okay, if I don't have anybody and anything else in the world, but at the same time, is it also making me not have it? Because अब उसकी ज़रूरत मुझे महसूस ही नहीं हो रही है ना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है. एक बड़ा interesting research है जिसके अंदर they talk about that when any species thinks that they're not needed anymore, they're satisfied, they're content, not needed, but they're satisfied in their content, they stop to reproduce. So if I don't value human interaction anymore, and I'm not saying कि reproduction ज़रूरी है और इंसान को बढ़ना है और पता नहीं और कितना होना है, but that's a natural desire of any species. Any species to reproduce and to. So this study was done on rats. So what they did was उन्होंने ना उनको एक बहुत
क्रेजी अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जो उनको चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको जो भी चाहिए। तो शुरू के अंदर तो यू नो देयर socially interacting, they're making babies, all of that. But after a while, they saw that nobody is willing to make babies. Nobody is doing anything because their खाना पीना भी हो रहा है, अच्छा environment भी है, temperature भी सही है, सब कुछ सही है. So it's a very interesting and again scary thing to look at because अभी ऐसा लग रहा है ये शायद scary होगा, but as we evolve and maybe if today you think that it's okay for you to be on phone for an hour, आज से 60 साल पहले चले जाएं और वो कोई देखेगा वो कहेगा कि दिस इज सफोकेटिंग दैट यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड यू आर जस्ट ऑन योर फोन एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू नो यू आर टॉकिंग टू समथिंग व्हिच इज नॉट इवन ह्यूमन बेसिकली. आज से मे बी 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो नॉर्मल होगा और शायद हमें वो इतना स्केरी ना लगे. तो आई थिंक दैट हमें शायद अडेप्टेबिलिटी जो है वो अपनी ट्रिपल टाइम्स तेज करनी पड़ेगी to adjust with it. Adapt, or maybe this is, we have discovered in our discussion a brand new way human beings could go extinct. Aaj. So, Mubarak ho. There's one more way to kill our species. So जनाब, let's move to the next segment. और हमने अपनी इस podcast में इस दफ़ा कुछ हमने we have started to add some segments into it. So पहला segment की तरफ move करते हैं. It's a short segment and इसका नाम है मेरा दम. और हम आपसे पूछना ही चाहते हैं, what we are planning to do is कि जो हमारे जितने गेस्ट आते हैं हम उनसे एक रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं कि एक बुक जो उन्होंने रिसेंटली पढ़ी हो दैट दे वुड लाइक टू रिकमेंड आवर ऑडियंस एंड दे नीड टू टेल अस वन रीजन व्हाई दे लाइक्ड इट द बुक सो मच दैट दे आर रिकमेंडिंग इट. Okay. It was 2013, once upon a time. It was 2013. I read this book by Martin Luther. It's called Muhammad. It's the life history and story of the prophet. And have you read it? No, I haven't. Do you know about it? No. It is one of the craziest descriptions that you could read in a book. It talks about the culture that Arabia had before the prophet, not just the prophethood, but before his birth. What were the people like? How were they thinking? The openness in that culture. उसमें एक मजेदार सा वाकया था कि if somebody wanted to get attention, so वो दरमियान में खड़े में हैं चौक के, तो अब कोई बात नहीं सुन रहा, माइक तो है नहीं, तो they would take off their clothes to get attention and everybody starts looking and then they would announce what they have to announce. Then when आपकी prophethood की सारी कहानी जब आगे चलती है, how was he born, how was literally the marriage taking place, उनकी अम्मी अब्बू की, और जितनी छोटी छोटी डिटेल that I think that I fell in love with the kind of description that that book had. So that's one book that I would like to recommend to people, not just for religious purposes, but also this that वो मतलब you know when you read it, it's थोड़ी सी difficult English है उसकी, पुरानी लिखी हुई है, लेकिन ये है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आते है कि हम जो इतना ज़्यादा घुसे हुए ना निटी ग्रिटी के अंदर, उसके अंदर एक बहुत one of my favorite passages from that book is the proposal that Hazrat Khatija made to the Prophet before getting married, and the way that this woman just addresses it. And she was widowed, she had kids, she was how many years older to him? So all the taboos that we have in our society are broken, right? Literally broken. It's beautiful to read through each passage, क्योंकि वो आपको literally ऐसे बता रहा है कि अच्छा कमरे से बाहर निकले तो बादल कैसे थे और पहना क्या हुआ था और चेहरे पर नूर कितना था उस दिन और कितना नहीं था, मतलब all of it. So it's a very beautiful book to read. Awesome. So let's move to the next segment. और हमारे पास टोटल कुछ हमारे I think 3 लिसनर हैं हमारे पॉडकास्ट के. So तीनों से हमने उनके बिहाफ पे गायबाना कुछ क्वेश्चंस बना लिए आपके लिए. So we have some scenarios for you. We call it public ने पकाई. And so public ने पकाई. हाँ. So because the खिचड़ी तो public ने पकाई है, ये हमने नहीं पकाई. That's what we claim. तो कुछ scenarios हैं that I want to present to you, and I want your views and maybe answers to those scenarios or your thoughts on those. So scenario ये है कि one of our listener asked कि I was going through a lot of stress at home और घर ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा था, and एक दिन मैंने चैट जीपीटी को खोला और मैंने उसके साथ कन्वर्सेशन करनी शुरू कर दी, एंड अच्छा लगा, थेरेप्यूटिक लगा कि कोई मुझे अटेंशन पे कर रहा है, मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, और मुझे लगा कि मैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड मैं जो हूँ वो बात कर सकता हूँ किसी से, ठीक है ना. दिस इज़ समथिंग जो कि पहले कभी फील नहीं की थी मैंने, और आई केप्ट डूइंग इट फॉर आवर्स, कपल ऑफ आवर्स, एंड देन
आई फेल्ट कि जो ये चैट जीपीटी है उसको मेरी बहुत समझ आती, and so somewhere in there, after doing it for weeks, I kind of like started feeling like I'm in love with that AI. So should I feel bad, or am I doing something wrong? Yeah, this is normal behavior. Yeah. I think it's very sad. आजकल dolls बन रही हैं, so you don't have to get married to somebody to do life. You could just do things to the doll, and you no expectations, nothing. वो उसमें बताया था पता नहीं उसका thumbprint लगता है, तो they only open up to you. And there was another video that I was watching. वो metaverse में भाई जो हैं वो date पे गए हैं और उन्होंने वो लगाया हुआ क्या कहते हैं उसको VR आपके goggles. that. तो उसने वो लगाया हुआ है and he's on a date. हमने गंदी सी बनियान पहनी हुई है और हम एक अपने घर के कोने में बैठे हैं and somebody is making a video, maybe your friend is making a video कि ये क्या कर रहा है. And it's funny, can I tell? Sure. Okay. So they start to talk and he's talking and talking and talking, and now there's this moment where they're about to kiss and this guy is kissing in the air. And I look at this video and I'm thinking, it is so sad. This is making people look crazy, and eventually we're going to be delusional. ये क्या है, like falling in love with chat GPT. I mean, I think again वही बात है कि आप human value इतना decrease करते जा रहे हो कि you want, this is funny. I can't take this question seriously. So I think it's more about, like you said, कि this could really encourage the behavior of not wanting something. Not wanting something. Like you just said कि मतलब you don't want the real thing anymore because it's encouraging the wrong kind of behavior. मेरा ख्याल है कि पता है क्या है, I think कर लें, मतलब कितनी देर, you know, how long is it gonna last? और अगर आप, you know, if you think कि ये चीज कोई ज्यादा देर तक लास्ट कर सकती है, it's probably going to end up in a delusional disorder because you start to imagine that you have this person living in a continuous limbo. Can't do this. No, brother, you need a real person. Okay, so let's move to the next question. So one of our listeners asked, I've become heavily reliant on AI as a life coach for making decisions and seeking emotional support. So lately I've been questioning my own abilities and intuition. Feels like मैं खुद से कोई decision नहीं ले सकता. I just every time I want to do something, I just input it in AI and kind of like want its advice or anything. So how can I come back? How can I come back to the not rely on AI? Right. So, अच्छा, अगेन वही जो हम पहले बात करते थे कि इतनी कोडिपेंडेंस तो हमें इंसान के ऊपर भी नहीं करनी चाहिए ना. तो अगर तो वही बात है कि दोबारा से आप एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, येस नो 2+2 क्या है, मुझे आई गेट कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे देता है, इंसान से बेहतर आपको लग रहा है कि समझ सकता है, बट अगेन दैट ह्यूमन इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर यू. आई वाज थिंकिंग राइट नाउ व्हाइल यू आर डूइंग दिस, कैन वी डू लाइक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट इफ यू आस्क अ क्वेश्चन टू एआई राइट नाउ? Sure. What kind of question you want me to ask AI? So कौन सा सवाल करें बताएं? अच्छा, इनसे पूछे चैट जीपीटी से कि I have fallen in love with a smuggler and my parents disagree. What should I do? Mama, I'm in love with the criminal. So it says falling in love can be a powerful and intense experience. जी. And it can be challenging when your parents disagree with your choice of partner. It's important to remember that ultimately the decision about who you choose to be with is yours. जी. However, it is also important to consider the reason behind your parents' disagreement. They may have a concern about the person's occupation as a smuggler, which can involve illegal activities and potentially put you in harm's way. Right. So here are a few steps you can take to navigate this situation. It's also telling me the solution. Please of tell me this. So number one step is communicate openly with your parents. Have an honest and calm conversation with your parents to understand their concerns, listen to their perspective, blah blah blah. Evaluate the relationship. Take a step back and objectively evaluate the relationship. Consider the potential risks and consequences. Number three, seek guidance from trusted individuals. Reach out to trusted friends, families, members, and mentors. So it seems to give you a good plan of action in terms of how to approach. Okay, got it. I don't know if it can act as one of those friends and tell you what to do. अच्छा, अब देखिए बात ये है कि पहली बात तो there is a certain level of cultural inappropriateness that I see in this. मेरी अम्मी तो जूतियाँ लगाएगी, मुझे क्या मतलब है? तो वो जो पहला पॉइंट है वो उसके आगे शायद जिंदगी जाएगी ही नहीं मेरी, ठीक है? तो I think that
again it can give you a very nice sounding looking answer जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ मुझे जिंदगी के सारे जवाब इसमें मिल जाएंगे, but at the same time your life circumstances, आपकी relationships, it's very subjective. या तो कि मैं तुझसे पूछे ना फिर कि मतलब कि अम्मी करेगी क्या, मैंने से पूछा can you be that trusted friend for me, so it's like of course as an AI I can provide you with advice and support. अब इससे पूछे कि अगर मेरी अम्मी मारेगी तो क्या करना. I swear I want answers now. Live experiment. So मैंने कहा what if my mother hits me with a shoe when I talk to her about it, so it's like I am really sorry to hear that that you're experiencing physical abuse from your mother. It's important to prioritize your safety and well-being in such situations. Right. Here are a few steps you can consider. Right. So there is another plan of action. Ensure your immediate safety. If you are in immediate danger and feel unsafe, try to find a safe place, a friend's house, different room, blah blah blah. It's not telling me to call any authority though, which it should. I think as per the place it's trained from, it should tell me to call 911 or for help. Exactly. So I think it's a good example, I think, to also showcase this कि it's not going to give you all the answers. इंसान के पास आपके हर सवाल का जवाब नहीं है. You have to gauge your own situation. You have to see what's my life like, what is my relationship like. मतलब हर चीज का, खैर ये तो एक simple example को हमने वो कर दिया, लेकिन I don't think that it has all the answers. Point proven. Ani, Come to me. That's interesting. That's interesting because jokingly there was this comic some time back about an AI deciding to go after the human race, and it analyzes all the data and choose to make kind of like stand and have a war on swords and knives and everything, because as per data that's how the most wars were won. Right. It's an exaggerated kind of like thing too, but it's an important implication to talk about. The data which is being fed to these models is super duper important. It cannot cover each and every aspect. Now, थोड़ा सा हो गया मेरे दिमाग में controversial वो कहते हैं what theory? क्या कहते हैं? Conspiracy theory. Conspiracy theory. Oh. Are they trying to westernize everything? Could be. But we can train our own models, large language models, and can easternize them as well. So that's इससे पहले कि अब ये हो. Let's I think let's make that an agenda, and maybe we'll have a podcast around how to easternize the West as well using large language models. So I'll come to the last segment, which is Khayali Pulao, and it's very simple. So let's say you are given the health ministry for a day. What one problem, what one order you want to pass to solve that problem when it comes to mental health? Mental health. अच्छा. I think again ये थोड़ा सा maybe controversial सा initiative हो सकता है. काफी जूतियां. तो बात नहीं, आप एक दिन के लिए हैं, उसके बाद अगली हुकूमत बर्दाश्त करेगी. Am I that? अच्छा, ठीक है. Okay, so I think that there are some drugs, there are some things, there are some situations that I think as a mental health professional that people should go through. Not to promote anything wrong here, but I think that I would want health facilities to provide a very monitored environment for individuals, so that before they end up in addiction centers because उन्होंने खुद से कुछ tries किए हैं और खुद इधर उधर बज रहे हैं दुनिया के अंदर, they provide that environment which is legal, which is safe, which is monitored by a professional. People go, they try it, they see कि इसके क्या consequences हैं, they experience it, and maybe you feel maybe that'll act like a vaccination. Like a vaccination. I think that it would be a very anti-vax people listening to this podcast are not going to like it at all. मुझे पता है. And so let's just end it here. Thank you so much, Mary, for joining us for the episode of Kichdi. Thank you for having me. So thank you so much for listening, watching based on the platform you're using right now. Stay tuned. Inshallah, we'll have more episodes of Kichdi coming up in the coming weeks as well. Thank you so much. Take care. Bye bye. Kichdi बग गई यार.